So I welcome all the delegates and all the faculties who are here. Namaskar. My name is Vivek Sharma. I'm a social entrepreneur, and I run an organization that works for cancer patients and caregivers, and it's a kind of community that we are trying to build so that because we all know that cancer is something it requires multi-dimensional approach to treat and even to rehabilitate. And I'm so grateful to having all of you together here. And today's session is about kind of learning from the experts and brainstorming that how we can create a sustainable ecosystem wherein everybody gets benefited, and especially patients, because everything is centered around patients and caregivers. We have eminent panelists today, Dr. Amit Joshi, we have Dr. Rajesh Shukla. Dr. Amit Joshi is uh, he's a medical oncologist, and sir is an expert in GU cancer per se, and works at Tata Memorial Hospital, Mumbai. We have Dr. Rajesh Shukla. He is former VP of Tata AIG, and he has he's currently working with Marsh and Company, and they are into insurance sector. So we have got somebody to address that need of the patients. We have Mr. Murthy, who himself is a cancer survivor. He runs Men Can, an organization, an NGO that deals with cancer particular to men. We have Urvashi Prasad today. She is Director Niti Aayog, who is into policy making, of course, and we have Dr. Ishan from Pfizer, who is representing the industry part of the domain, because many of the times we face this issue, like we have a lot of questions when it comes to drugs. When we have a lot of questions, we have a lot of issues related to the access to the treatment. I will start with Dr. Amit Joshi, sir. I'm so grateful to have you today, and I'm eager to listen to you, and I'm sure everybody is. Uh, can we all have our uh, camera on, so that if possible, and then we can start the discussion. Thank you. So I'll start with Amit, sir. Sir, when it comes to prostate cancer, because September was recently observed as Prostate Cancer Awareness Month, and I'm glad that Dr. Gagan Prakash has also joined. He is a surgical oncologist, and he looks at the surgical aspects of the prostate cancer or the GU related cancer, and uh, so let me start with Amit, sir. Sir, we would want to know from you that when it comes to cancer, cancer itself is a very devastating thing, and it brings a lot of chaos, brings a lot of ambiguity. So, what do you think that when it comes to prostate cancer? Recently, we celebrated or observed Prostate Cancer Awareness Month in September. Please take us through the journey, like what do you think that patient land up with kind of queries, what are there in their mind, what are the basic issues that they are facing when they come to you, that what is that phenomena that is going in their mind. So basically, in prostate cancer, when the patient been diagnosed, uh, mm, as a general question, they just want to know whether the disease is confined to the prostate, or what we call as it's a localized disease, or it's a metastatic disease. In layman, whether it's limited to the prostate, or it has gone to the other part of the body for the treatment purpose. And then the next question usually comes with that: what is the most effective treatment? Whether it is amenable for any surgical approach, or it will require a hormone treatment with the radiation, or is there any role of chemotherapy? So basically, patient comes, patient wants to know the stage of the disease at the time of diagnosis to a treating physician, and then depending upon the various investigations like a, PET, PSMA, PET CT, or MRI, we define the treatment, whether it is a localized disease, or it's a locally advanced disease, or a metastatic disease. So we plan the treatment according to the stage of the disease. So mostly the patient comes, or their caregiver comes to know whether the disease is amenable to any curative treatment or not, and what will be the long-term survival for this stage of the disease.
Very rightly addressed, sir. We have Dr. Gagan Prakash, who looks after the surgical aspects of prostate cancer. Dr. Gagan, please let us know that what is the scenario overall that we see in our country? Like, when the patients are reporting to you or the department, are they in a position to be uh, being operated? They are arriving you early, or what is the whole scenario? If you can uh, show some kind of glimpse to us. Yeah, Vivek. So, first of all, thank you for this invitation and to you know let us have a discussion with everybody around here. I hope I'm well audible. Yes, 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 Doctor. So, prostate cancer is a little different from a lot of other cancers in terms of its spectrum. At one end, we have an early detection of prostate cancer, जो कि एक सिंपल ब्लड बेस्ड टेस्ट जिसको कि पीएसए बोलते हैं उसके द्वारा हुआ किया जा सकता है. And these this end of the spectrum could be what we call sometimes so low risk or so indolent that they don't really behave like cancer. They would be going on for years together, and this is very one of the few occasions in oncology जहाँ पे हम patient को ये option भी देते हैं कि आप कुछ भी मत करो. एंड जो दूसरा एंड ऑफ स्पेक्ट्रम है कैंसर का वो एक एडवांस या मेटास्टेटिक वाला डिजीज है जो भी डॉक्टर अमित जोशी ने बताया वन ऑफ द स्टेजेस. एंड ये जो है ऑब्वियसली एडवांस डिजीज है जो कि जनरली बोन्स में जाता है, सो बोन मेटास्टेसिस या बाकी साइड्स में मेटास्टेसिस होता है. अभी देयर इज एक्चुअली अ stark contrast in the distribution of the kind of stage which is seen in India versus in the Western world. वेस्टर्न वर्ल्ड में आज करीब 20 साल पहले जो है कुछ हेल्थ पॉलिसीज ऐसी बन गई कि आपको एवरीबडी हु इज मोर देन 55 और 60 इयर्स ऑफ एज शुड गेट अ पीएसए डन. एंड उस उसके वजह से दो चीजें हुई. एक तो ये कि बिकॉज आप पीएसए सबका करने लगे तो सडनली द इंसिडेंस ऑफ द प्रोस्टेट कैंसर जो है वो काफी बढ़ गया. पर एक दूसरा फिनोमिनन ये हुआ कि वी ऑल्सो स्टार्टेड डायग्नोजिंग अ लॉट ऑफ अर्ली डिजीज जो कि शायद कभी उस पेशेंट को नुकसान ही नहीं करता. एंड दे देयर बैटल इज समथिंग कॉल्ड एज ओवर डायग्नोसिस. तो whereas they made this as a policy, but over the years they realized कि क्या हमने are we over diagnosing people? I mean, is this actually required? ऐसा तो नहीं कि हमने diagnose कर दिया but it was not causing any harm to these patients. एंड बिकॉज ऑफ दैट एक्चुअली देयर वर वेरियस चेंजेस. फिर उन्होंने ये जो स्क्रीनिंग वाली जो चीज है कि आप 55 के ऊपर या 60 के ऊपर सबका पीएसए कराओ, दे एक्चुअली मेड सम चेंजेस टू दैट एंड देन it's still not completely settled. But because of that, whenever one had to diagnose the prostate cancer, it got diagnosed at an early stage. And as a consequence, the proportion of patients that present with them with a metastatic disease या फिर advanced disease वो 10% से भी कम है. एंड ये आंकड़ा टाटा के पेशेंट्स के लिए या फिर इंडिया के लिए इन जनरल देखेंगे तो ऑलमोस्ट करीब 60% के आसपास है. तो 60% of our patients present with an advanced stage, whereas less than 10% of the patients in the West present with advanced stage. It used to be, I would say, very rare, but now one of the phenomena that we are seeing is कि बहुत सारे laboratories आ गए हैं जो कि एक I would say regulated या unregulated तरीके से PSAs बहुत ज़्यादा suddenly होने लगे हैं. And we are seeing more and more patients जो कि PSA की वजह से early stage of prostate cancer में आ रहे हैं. But I think the entire spectrum is seen in the country. थैंक यू डॉक्टर गगन. ये बहुत इंपॉर्टेंट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन है. लाइक जैसे आपने बताया कि कैसे एक एक छोटा सा जो इम्प्लीमेंटेशन है, चाहे वो पॉलिसी लेवल पे हो या किसी भी लेवल पे हो, कि एक टेस्टिंग कराने की वजह से कैसे एक इंसिडेंसेस जो है इतना वेरी कर सकते हैं. अ, हम जब बात करते हैं हमारे इंडियन इकोसिस्टम की या हेल्थ केयर सिस्टम की, सो इट इज काइंड ऑफ कंसिडर टू बी अ वेरी बिग एलिफेंट दैट इज वेरी वेरी डिफिकल्ट टू मूव, बिकॉज इतना बड़ा पॉपुलेशन है. एंड व्हेन इट कम्स टू एक्सेस टू द केयर, एक बड़ी चैलेंज ये होती है कि हमारे देश में अभी भी जो है बहुत सारा जो हेल्थ केयर बर्डन है वो सेल्फ पेड है. एंड यहाँ पे इंश्योरेंस की बड़ी इनएडिक्वेसी है. हमारे साथ इंश्योरेंस एक्सपर्ट हैं डॉक्टर राजेश शुक्ला. राजेश जी, नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत है आपका.
हमें ये बताइए कि क्या सिनेरियो है जब आप इंश्योरेंस पर्सपेक्टिव से देखते हैं, आपने एक टाटा एआईजी जैसे इतने बड़े ग्रुप को लीड किया है, तो मतलब कितना स्टार्क डिफरेंस है? मतलब क्या आपको लगता है कि वी आर वी एडिक्वेटली इंश्योर्ड और हाउ इनएडिक्वेटली वी आर इंश्योर्ड एंड कितना बड़ा गैप है हमारे यहाँ? Amit, first of all, I would like to thanks for your all initiative which you are doing, and it's a fabulous job bringing a platform on which not only the patient but the caregiver and other people are also there who are the subject matter expert. It's a right forum to take the discussion forward. The first and foremost important thing is that in India, if you see the awareness of for the disease has increased significantly since last 3 years. And with the COVID coming, the awareness towards health insurance has gone next level. I give you one number and you will be really astonished with that. Since the time the privatization has happened, almost since 1999, I can tell you health insurance was always a second fiddle. It was growing very fast, but it was after all the motor insurance. But since last 3 years, it has just taken a next step and grown significantly. Now health is a number one in GI insurance. Now coming to very specific programs for the cancer care, when we talk about what type of programs which are there, many of the people are not aware that there are multiple government initiative which is there under the cancer care, under which they can take a treatment from the specific preferred provider network hospital. There are multiple programs which has come over the period of last 1.5 decade, which are very, very cancer specific. Few of the company who has launched, they have been pioneer. In fact, I was a part of a GIC committee who has launched first time cancer care, HIV care product. So these are the products which are available and which is not been known to the market. And most important thing is that in terms of a cancer care, there is a huge misunderstanding or misconception कि chemotherapy होगी तो इसका coverage होगा कि नहीं. So chemotherapy is covered. Nowadays we have a product where oral chemotherapy is also covered. Earlier it used to not to be covered. So in terms of insurance in the industry, insure product has been evolved over the period of time. Pricing which was very, very significantly high, it has just got optimized. And third one most important thing is that now people want to take this insurance. And if you have been cured by a cancer, there are certain ways that coverage can be done. And it can be having certain waiting period, and after that the person can cover under the program itself. So that's the thing which has evolved over the period of time. Amazing. I think that is very valid, and I'll come back to you, Rajesh ji, because आप बहुत I would say a key person है इस पूरे discussion में, and you can throw light on many other things, and I'll come back to you. Before that, I would like to invite Dr. Ishan, who represents Pfizer, which is a global multinational company that is into manufacturing of cancer drugs. डॉक्टर साहब नमस्कार और बहुत-बहुत स्वागत है आपका। हमें ये बताइए कि जब भी हम बात करते हैं एक्सेस की, तो सबसे बड़ा जो हर्डल कई बार ऐसा हो जाता है, लाइक सर्जरी वगैरह तो होती हैं, बट जिस स्टेज में हमारे देश में बीमारियां या कैंसर पर से डिटेक्ट होते हैं वो एडवांस स्टेज में होते हैं, एंड चाहे वो कीमोथेरेपी हो, टारगेटेड थेरेपी, इम्यूनोथेरेपी हो या कोई भी तरह की दवाइयाँ हो, बड़ा वाइटल रोल प्ले करती हैं, एंड कई बार बड़ा हिंड्रेंस होता है, बिकॉज आई अंडरस्टैंड कि इसमें रिसर्च होता है, एंड इट्स नॉट ओनली अबाउट वन पर्टिकुलर कंपनी और वन पर्टिकुलर एंटिटी और इंडस्ट्री, इट्स लाइक एवरीबॉडी इज इक्वली इंपॉर्टेंट इन दैट, चाहे वो क्लिनिशियंस हो या गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हो, प्राइवेट फर्म्स हो, रिसर्च हो, और एडवोकेसी ग्रुप भी आज वी सी दैट इट इज काइंड ऑफ ग्रोइंग इन नंबर। आपको क्या लगता है कि किस तरह का कोलैबोरेशन, देखिए प्रॉब्लम चैलेंज तो है, नाउ लेट अस इफ वी हैव टू टॉक अबाउट द सॉल्यूशन, what kind of collaborations you think that amongst all the stakeholders should be there, जिसको leverage करके कोई एक ऐसी चीज जो है जिसको हम एक्सेलरेट करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक वो जो एक्सेस है उसको मुहैया कराने की कोशिश करी जाए। Yeah. Thank you so much, Vivek ji, first of all, for organizing and inviting us for this forum. So I think it's a very valid question which you have raised, right? And it has a multiple factor which needs to be considered. So first aspect is an awareness. So when we look at the collaboration with the various organizations, whether it is a government body,
research organization, or the patient support group, what we realize that there are 3 or 4 major domains where we need to work as a in a collaboration. So awareness, diagnosis, treatment, and at the end, the adherence. Now, last year when we released, so as a Pfizer India, we have released the patient charter, and it lives with the 3 values like listen to patient, act on it, and empower the patient. Right now, under which what we understood that one, of course, the awareness about the disease symptom, the risk factor, which is quite low with the patient. So one area where we look at is to increase the awareness about the disease or their risk factor or their symptoms. So we have various cancers which are like symptomatic cancer, right? Those cancer, if patients are aware about those symptoms, early signs, they can seek medical help. Second point, when they go to any of the medical professionals, their first point of contact would be a primary care physician. Most of us, right, for any symptom, we directly first go to our primary care physician, which can be general practitioner or consulting physician. Now, when we heard those patients, what we realized that 20 to 30% of those physicians are not able to suspect the cancer. Right. So that is a second area where we need to enhance the awareness or enhance the capability of this primary care physician. So at least they suspect the cancer and refer it to oncologist or refer it to the surgical oncologist or the right specialty at the right time. Because we all know if any cancer is detected early, the chances of survival would be better. Second aspect would be the diagnosis front, where even as a Pfizer, we have like provided a lot of diagnostic support to patients. So some of the supports are like a partial support, some of the supports are the full support. Like just to give example, like ALK, ROS, EGFR. For all those testing, we have provided certain coupons to physician, and physician have provided those coupons to patient. At the same time, we have also worked on enhancing the capability of the physician to understand the recent diagnosis, what are the need of the diagnosis, etc. So that is the second area where we feel there is a need of collaboration. The third aspects, as Dr. Gagan also highlighted, right? In India, majority of the patients reach hospital at a later stage. So what we need to also focus on the preventive healthcare or the early detection, right? Because that is also another important area where we collaborate, enhance awareness. We focus more on an early detection. The last bit is an adherence. We have seen that the treatment has been started, and some of the patients are not able to complete the entire treatment. So we need to work on that. That how we ensure that patients continue taking the therapy to derive the benefit. And one such example, like we have initiated some campaign during the COVID time called "Care Should Not Wait," because what we realized during the COVID time, the cancer patients were not going to hospital to get their treatment. So those kind of initiative will also help in an adherence of the treatment. So I would say collaboration is required in this multiple area to ensure that the entire continuum of care is maintained and at the same time the quality of care is provided to the patient. Thank you so much, Dr. Ishan, for the perspective and kind of sharing us or taking us through the journey that किस तरह के possible collaborations होते हैं और क्या-क्या आज किए जा रहे हैं. Now we have got very important stakeholder who himself is a cancer survivor and he runs an NGO called Men Can, जो कि focus करता है towards mostly men related cancer पे. Mr. मूर्ति, नमस्कार and बहुत-बहुत स्वागत है आपका. And I would request you to take us through your journey because जितने भी हम stakeholder से बात कर लें, चाहे वो physician हो, चाहे industry हो, चाहे कोई भी हो, everybody is working for patients. And let us hear from a patient or somebody who has gone through the journey that actually it should be split into part, like what has been your journey first, and that what are barriers you think that you faced and could have been better one. Good evening, everyone. Good evening, the forum. Amit sir, especially Amit sir and Gagan sir, good evening. Vivek sir, I would like to make a small correction. Correction in the sense, I would like to make a small thing that this Menkan is an initiative of the between it is actually a baby of the EU DMG of Tata Center, which consists of Amit sir, Gagan sir,
and I have been fortunate enough to associate with the DMG of Europe, and we have been thinking of this for a long time, and I think it is now taking a shape, and we are planning many activities in future under the guidance of Gagan sir, Amit sir, and the entire DMG of Tata Memorial Hospital. And secondly, uh, see, I think everybody tells us, what a cancer patient goes through. Anyone who detects with a cancer, it is a unavoidable thing, and who goes through a lot of mental trauma, stress, financial stress, family stress, and especially everybody is talking about the care, where the patient goes for the care, which hospital, which doctor, and the primary physician, what, when we detect, there are many things which we can talk about. So when it comes to any cancer, especially I'm talking about men, which are good that you have taken this up, because many organizations have been working on the women breast cancer, child cancer, and all that, but it has been men cancers have been ignored for for a long time. That is the reason the DMG of Tata in fact has designed this mention, and the group name is also given by the DMG Amit sir, and the men can, you know yes. So uh, it is still at the first thing I would say is that the detection of cancer at the right time. In India, this is what has been the problem, which is that it is always been detected in the third stage or the fourth stage. That is the biggest problem. Probably the people like us in collaboration have to do a lot of awareness programs in terms of creating our suspicion or the in the awareness levels, to increase the awareness levels among the men, so that uh, people uh, can easily, or they can easily be treated, and without much difficulties in terms of everything, in terms of financial stress, in terms of mental trauma, family, everything. So that has been a biggest area I think we need to really focus. That has been one of the motive of the mention, that we wanted to really do the programs in terms of create the awareness, so that the people get detected or the diagnosed or the come to the hospital when they are at first stage or a second stage, so that it can be easily treated, because the prostate, penile, or testicular, these are the cancers which can be treated, and most of the percentage will get cured. So, so this is one area which we really need to work. Insurance part, I really don't. I don't know. Probably we need to see that. But yes, this is one area, and secondly, the navigation of the patient to the right channel is one more big challenge I feel. Is one of the biggest challenge which we have right now in India. The diagnosis at the earlier stage, the navigation, and of course providing financial support to the patients who are economically challenged. So these are the three which I would say few of the biggest challenges. And with these kind of forums, I think we can work together and probably uh, uh, increase the awareness levels, and of course to get to a level wherein patients will not also go through a lot of pain and stress, and it can be easily treated. So these are certain things which we really need to focus on. Right. Uh, Thank you so much, Mr. Murthy, because what you narrated, like navigation is, I completely agree, and I'm sure everyone here would agree with that, that navigation is a challenge in our country. Financial issues are there, mental issues are there. I would like to come to Dr. Amit Joshi and request him to share, the state of the current incidences when it comes to, because or maybe I may request Dr. Gagan or Dr. Amit, both of you, whoever thinks that is the question is more close to you. uh,
what in what stage generally we are seeing, because it's an assumption, like unless we hear from the experts, it's an assumption that okay, we are getting late stage detection. But when it comes to prostate cancer, are we really getting any early detections? And if not, then what are the options available for the advanced treatment? Like how good is the prognosis, how good is the caretaking? Because probably in institutions like TMH, most of the things are organized. But India is a big economy, a big country, and when you meet your colleagues, and what has been your learning, like how it is being managed overall? I think in Tata, for a prostate cancer, as Gagan has already told about that, around 60% patients are unfortunately diagnosed in a metastatic condition, and 40% are localized or locally advanced. The screen detected early cancer is still like the Western world, where the PSA screening is very commonly done. We are seeing the number has increased as compared to the past because of all the issues which Gagan has narrated, but we see still a large number of metastatic de novo that at the time of presentation they and the one factor which are being discussed, that the primary physician or treating physician, they should suspect, because previously the incidence as the longevity is increasing, many patients are surviving for a longer period of time, so the incidence is indirectly increased because of that also. So I think the differential diagnosis for keeping the prostate cancer in a patient who presenting with unexplained backache which is not responding, or unexplained or persistent urinary symptom despite the adequate treatment for BPH, or unexplained anemia, fatigue. So that differential diagnosis should come into the picture, and then the appropriate workup then needs to be done to rule out the metastatic CA prostate. Regarding the prognosis of a metastatic CA prostate, fortunately, with as compared to the other cancer where the prognosis is not that great for a metastatic patient, but for prostate cancer, even in metastatic cancer, we with the current available treatment and the different treatment options, the 5-year survival is close to, say, to 50 to 60% patient if they are treated adequately and with the all the treatment available. So even in metastatic condition, we have at least 4 or 5 lines of treatment available for a metastatic CA prostate. So if we use wisely one by one option, 50-60% patients are able to survive for more than 5 years. So metastatic CA prostate is still in a stage 4. It's a disease where we expect good quality of life with a significant longer duration compared to the other cancers, where the unfortunately the treatment for most of the metastatic CA prostate is still within the reach of the, so mostly chemotherapy, the oral, the hormonal therapy treatment, which are readily available, manufactured by Indian pharmaceuticals. So the only few of the treatment options are in the metastatic CA prostate are very costly. Otherwise, fortunately, the 2/3 of the options are easily taken by patients, because the drugs which are used in this are manufactured in India, and most of the time the cost is like the abiraterone which is used in prostate cancer. The monthly cost in Tata is around 6 to 7,000 per month. So treatment is affordable and improves the quality of life and the longevity even in metastatic CA condition. That's a sunny side of the thing that we have seen, sir. And thank you so much for kind of giving us that clarity, because अदरवाइज कैंसर का नाम सुनते ही, किसी भी तरह का कैंसर हो, कोई पहला सवाल तो ये पूछते हैं कि भाई मतलब डॉक्टर साहब कितने दिन बाकी है हमारे पास। दूसरा सवाल ये आता है कि कितना खर्चा लगेगा। तो प्रोबेबली यू हैव गाइडेड अस वेरी वेल। दीपक जी, आई विल कम बैक टू यू। आई हैव सीन योर रेज्ड हैंड, बट बिफोर दैट लेट मी कम बैक टू मिस्टर राजेश। डॉक्टर साहब, हमें ये बताइए कि जब हम हमारे देश में इंश्योरेंस की बात करते हैं, तो ये एक ऐसी चीज है जो बड़ी लाइक आई वुड से इट्स एन इग्नोर्ड प्रायोरिटी। सबको पता है कि ये चाहिए
सब उम्मीद भी करते हैं, जब हम कॉर्पोरेट में होते हैं तो लड़ जाते हैं कई बार कि भाई हमारा इंश्योरेंस ये इसको इंक्लूड कर लो और ये करना है, और बहुत सारे डिमांड्स होते हैं। लेकिन जब सेल्फ इंश्योरेंस की बात होती है तो जो जैसे लाइक मेरे एक फ्रेंड है तो वो बोलते हैं कि किसी भी एवरेज व्यक्ति की हमारे देश में जो है जो सम एश्योर्ड होना चाहिए वो 30 to 50 लाख के बीच में होना चाहिए। तो क्या आपको लगता है कि क्या क्या चैलेंजेस हैं, बिकॉज आप ऐसे रोल में थे और हैं जहाँ पे आपको बहुत सारा एक्सेस है टू द रिपोर्ट्स एंड ऑल द डेटा ऑन ग्राउंड। क्या हिंड्रेंसेस हैं, क्यों लोग इंश्योरेंस लेना नहीं चाहते हैं, और क्यों लोग मतलब लैक्सिटी पे बहुत सारा खर्चा करना चाहते हैं, लेकिन हेल्थ इंश्योरेंस की जब बात आती है तो उस तरह से उसको एक्सेस नहीं करते हैं? क्या क्या वजह हो सकती है? See, there are three layer of people in any of the democratic world or any of the world. One are the bottom of the pyramid, middle of the pyramid, and the top of the pyramid. Bottom of the pyramid in any of the globe program, it is protected by a government. Government take the initiative and they cover some or other insurance program. Same in India, we have Ayushman Bharat. We have in Maharashtra, if I talk about, there is a program which is specifically run by a Maharashtra government, which is covering not only cancer but all chronic care diseases. You won't imagine there are thousands of the diseases and surgery are covered under the program. और उसका process इतना simple है, Amit and Vivek and all team member. This should be going into the awareness model to the people. आज के डेट में किसी के पास भी आभा कार्ड है या किसी के भी पास अपना महाराष्ट्र का रेजिडेंस, इफ ही इज अ महाराष्ट्र का रेजिडेंस, आभा तो जनरल कार्ड हो गया, he can go to the network hospital, he need to register, and there is a proper mechanism established by a government where there is a assistance, there is an officer which is there who guide each and every step of the person to take a treatment through the insurance. Now, this awareness, first question what you have asked is that why people are not taking an insurance. So I say that it has changed significantly. पहले इंश्योरेंस पुश प्रोडक्ट था, अब इंश्योरेंस पुल प्रोडक्ट हो गया. Everybody is asking. Now coming to what is the right sum insured. 5 lakh rupees the right sum insured, because medical inflation in last 3 years has gone the highest. Earlier it was the single digit. Now it has gone 15-16%. And there are multiple costs which has escalated. Earlier the average ticket size of a treatment used to cost 30-35,000 rupees. Now it is costing 50-55,000 rupees. So because of that, I'm not talking about cancer, I'm talking about general. Now coming to, for the cancer average ticket size, it has gone significantly high. Earlier the surgery, chemotherapy, full package used to be around 3.5 to 4 lakh rupees with all chemotherapy session. Now this has gone to 5.5 to 6 lakh. So there is a two way to look. People take a 5 lakh policy, and there is a top up policy concept in which people can buy it very cheap. Don't buy 50 lakh rupees sum insured policy directly. There is a concept of a base policy, that's a 5 lakh, and then you take a top up policy जहाँ पे डिडक्टेबल 5 लाख कर लो और आप अपने 50 लाख और कवर कर सकते हो. तो उसमें कैसा होता है, पहले 5 लाख के खर्चे आपके हुए वो आपके मेन पॉलिसी से चला जाएगा. बाद में अगर आपने 50 लाख रुपए का टॉप अप पॉलिसी लेके रखा है, जो कि 50 लाख की पॉलिसी हार्डली 3,500 4,000 रुपए में आती है, इन केस इफ द एक्सपेंसेस गोज बियॉन्ड 5 लाख रुपीज, then this policy can get triggered. So it's a combination of main policy and top up policy. इम्पॉर्टेंट चीज क्या है, हमारे यहाँ गवर्नमेंट ने जो बॉटम ऑफ द पिरामिड के लिए काम किया हुआ है, बट मिडल ऑफ द पिरामिड देयर इज अ वैक्यूम. एंड आई टेल यू एंड आई श्योर यू पीपल हु आर हियर फ्रॉम द पॉलिसी मेकिंग, गवर्नमेंट इज एक्सटेंसिवली वर्किंग टू डू अ मिसिंग मिडल, वी कॉल इट मिसिंग मिडल इन अ डिस्कशन. उस मिसिंग मिडल के लिए कैंसर केयर, किडनी केयर, क्रॉनिक केयर, इन सब के लिए प्रोग्राम ला रही है. एंड दैट विल बी पार्ट ऑफ second version of Ayushman Bharat, in which all these people will get covered. And I tell you one most important thing, India is now moving into it insurance for all. That's the agenda which government is driving, and everybody will going to be covered either into the government program, either it is state program, or it will be part of that. You are part of some ecosystem, either as a government employee or private employee, you will be covered under the insurance program. So the penetration will going to be significant. That's really awesome.
थैंक यू फॉर शेयरिंग दैट पर्सपेक्टिव, क्योंकि जनरल जो परसेप्शन है वो ये है कि या इतने सालों से हम जो सुनते आ रहे हैं कि इंश्योरेंस जो है लोग नहीं खरीदते हैं, लेकिन दिस इज अ वेरी गुड पॉइंट दैट वी हैव एडुकेट, नॉट एडुकेट बट at least some kind of support system with us. I would like to request Dr. Gagan Prakash to share that जैसे हम बात करते हैं आज कॉस्ट की, क्योंकि कॉस्ट जैसा मूर्ति सर ने भी बताया कि मतलब एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट फैक्टर है इन दी एंटायर जर्नी ऑफ कैंसर ट्रीटमेंट। सर अगर जैसे मान लीजिए कि कोई बहुत सारे स्कीम्स अवेलेबल हैं, अगर हम मिडिल मैन की बात करें या जनरल लो मिडिल इनकम ग्रुप की अगर हम बात करते हैं, तो 2.5 लाख से 5 लाख जो है एक वो ब्रैकेट जो है वो समझा जाता है, तो क्या इसमें वो खर्चे कवर हो पाते हैं? चाहे वो सर्जरी के लिए हो, प्री सर्जरी, पोस्ट सर्जरी हो, और जो टेस्ट वगैरह जो यूज़ किए जाते हैं? So, विवेक, ये जो इसका जो इस सवाल का जो जवाब है वो एक्चुअली आई वुड से इट्स बीन अ स्टोरी ओवर द लास्ट डिकेड। और उसका जी। कारण ये है कि जो आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंस है, मतलब पेशेंट और उसके परिवार को जो स्पेंड करना पड़ता है कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए, प्रोस्टेट कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए, दैट इज समथिंग जो कि स्टेज पे डिपेंड करता है, and that has changed a lot over the last 10 years. So if we had to say compare between an early stage versus an advanced stage, तो early stage में we are talking about a curative intent treatment, हम बीमारी को जड़ से निकालने की बात कर रहे हैं, and generally ये या तो सर्जरी से होता था और या फिर some form of radiation therapy से होता था, जो कि एक लोकल ट्रीटमेंट होता था। एंड दिस इज वन ऑफ द एरियाज जो आपने सुना होगा कि रोबोटिक सर्जरी होती है, एंड रोबोटिक सर्जरी आज की तारीख में यूएस में अगर प्रोस्टेट की सर्जरी कैंसर के लिए होती है तो 95% ऑफ द टाइम्स वो रोबोटिक ही होती है, बिकॉज इट हैज प्रूवन सर्टेन एडवांटेजेस इन टर्म्स ऑफ की पेशेंट की रिकवरी कैसी हो रही है, जल्दी घर जा रहे हैं क्या, एंड कुछ कुछ और एडवांटेजेस रहते हैं जो इस एनाटमिकल लोकेशन में ऑपरेट करने के लिए होते हैं। नाउ बिकॉज ऑफ द रोबोट, ऑल्दो हमें शायद कुछ एडवांटेजेस जो हैं रिकवरी में मिल रहे हैं, बट एट द सेम टाइम द कॉस्ट ऑफ सर्जरी बढ़ जाती है, बिकॉज दिस इज न्यू टेक्नोलॉजी कंपेयर टू से एन ओपन सर्जरी और कंपेयर टू से लैप्रोस्कोपिक सर्जरी जो कि पहले हुआ करती थी। दूसरे एंड पे अगर हम देखें तो जो मेटास्टेटिक या एडवांस प्रोस्टेट कैंसर है उसमें शायद सारे कैंसर अगर हम देख लेंगे तो मेटास्टेटिक प्रोस्टेट कैंसर एक वो एंटिटी है जिसमें कि सबसे ज्यादा नई ड्रग्स एंड नए कॉम्बिनेशन एंड नए ट्रीटमेंट मोडालिटीज आए हैं। मतलब आज से शायद 15 या 20 साल पहले हम बात करते थे तो फॉर ऑल प्रोस्टेट कैंसर ये बीमारी जो है एक्चुअली टेस्टोस्टेरॉन इसकी खुराक है, इट फीड्स ऑन द टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन। तो वन ऑफ द बेसिक ट्रीटमेंट मोडालिटीज कि आप किसी तरह टेस्टोस्टेरॉन को कम कर दो, एंड देयर आर वेरियस फार्मास्यूटिकल कंपनीज व्हिच आर मेकिंग दीस इंजेक्शंस टू लोअर द टेस्टोस्टेरॉन। और एक सिंपल तरीका ये है कि आप टेस्टिस, एक छोटा सा ऑपरेशन करके टेस्टिस निकाल दो, टेस्टोस्टेरॉन कम हो जाएगा एंड जो बीमारी है वो रुक जाएगी। और कई दशकों तक, आई वुड से ऑलमोस्ट फॉर 30 इयर्स, जिसने ये डिस्कवर किया कि भाई ये करने से जो है बीमारी रुक जाती है, चार्ल्स हगिन्स, या गॉट द नोबेल प्राइज for that year. And then for the next 30-35 years, I would say, or even more than that, probably more than almost 50 years, this was the mainstay of treatment. बट पिछले 15 साल में जो है इतनी सारी दवाइयां आ गई हैं कि अगर मैं आपको मोटा मोटी बताऊं तो ये जो डॉक्टर अमित जोशी अभी बता रहे थे कि इवन इन एडवांस स्टेज इस बीमारी में हम लोग 50-60% 5 ईयर सर्वाइवल की बात कर रहे हैं। ये आज से 10 साल पहले प्रोबली 30% या 35% था, एंड दैट फिगर हैज ड्रास्टिकली इम्प्रूव्ड बिकॉज ऑफ दीज मेडिकेशंस। ठीक है, बट व्हेन इट कम्स टू द कॉस्ट, तो पहले जो एक सिंपल सी सर्जरी आपकी 20,000 में हो जाती थी, वो एक रिकरेंट खर्चा ये दवाइयों का कई बार लाखों पर मंथ भी जा सकता है, राइट? So, you have increased the survival, but that comes with a cost. The other thing which I would want to say is कि this whole thing कि आप पेशेंट को किस स्टेज पे डायग्नोज कर रहे हो, that also has a direct implication on the cost. And ये चीज जो है एक प्रॉपर स्टडीज में जो है, particularly जहाँ पे insurances are almost uniform in the western worlds, they have looked into these things. तो एक तरफ आपका एक ऐसा पेशेंट है
जिसको कि आपने अर्ली स्टेज पे डायग्नोस किया एंड से इवन रोबोटिक प्रोस्टेटेक्टमी करके और उसको क्योर कर लिया, एंड क्योर करने के बाद बोला आपने कि यू आर फाइन एंड दिस पेशेंट इज प्रोबब्ली नॉट रिक्वायर एडिशनल ट्रीटमेंट, वो केवल अपने फॉलोअप्स के लिए आ रहा है, बट इन टर्म्स ऑफ द डिजीज जो है ही इज फाइन। और दूसरे एंड पे आपको एक एडवांस्ड फॉर्म ऑफ ट्रीटमेंट है जिसको आप क्योर नहीं कर पा रहे हो, तो इसलिए पेशेंट को फर्स्ट लाइन थेरेपी, सेकंड लाइन थेरेपी, थर्ड लाइन थेरेपी, एंड ईच टाइम you know go to the next line therapy, often the cost also escalates. So when you're diagnosing a patient in the advanced stage, then the cost which the patient is bearing, or say the insurance is bearing in the Western world, also goes up much higher. So essentially what I'm saying is कि either by our health policies or various things, अगर हम इस बीमारी को जल्दी डायग्नोस करते हैं, तो जो ओवरऑल कॉस्ट है जो कि कंपनीज को या आउट ऑफ पॉकेट पेशेंट का एक्सपेंसेस होता है, दैट वुड आल्सो कम डाउन। थैंक यू डॉक्टर साहब। ये मेरे ख्याल से बहुत अच्छा पर्सपेक्टिव आपने दिया कि मतलब आज एक तरफ तो हमारे पास ये पॉपुलेशन है जो फॉर्चुनेटली इन प्रोस्टेट कैंसर जो ठीक हो पा रहे हैं, दूसरी साइड ये भी है कि नई दवाइयाँ आ रही हैं, नई थेरेपीज आ रही हैं, टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, उसकी वजह से सर्वाइवल और इम्प्रूव हो रहा है। और जब सर्वाइवल एंड इम्प्रूव जी 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 I'll just add one more thing, Vivek, because I mean, if we had to see it from a policy point of view, तो so whereas all cancers जो है वो एज डिपेंडेंट रहते हैं, एज बढ़ती है तो कैंसर का इंसिडेंस बढ़ता है, बट प्रोस्टेट कैंसर में सबसे ज्यादा जो है ये जरूरी है। एंड बेसिकली अगर हम अपना जो पॉपुलेशन का ग्राफ देखते हैं, जो कि एक टाइम पे एक ट्रायंगल हुआ करता था, एक पिरामिड हुआ करता था, तो वो जो पिरामिड का ग्रेडियंट है वो और कम स्टीप होता जा रहा है, मतलब इट इज टर्निंग इनटू ऑलमोस्ट लाइक अ लिटिल सिलेंडर, it is training from a pyramid to a cylinder. So what is happening is that we have a greater proportion of men who are alive above the age of 65, and I think some of the projections are कि 2030 तक शायद 12 से 15% जो लोग हैं हमारी जनता है वो 65 के ऊपर होगी। And if you had to imagine that from the point of view of our denominator, Indian population की 12% कितनी होती है जो 65 के ऊपर होगी, तो that's a huge population. एंड ये सारी की सारी बातें जो हम कर रहे हैं, इनका जो महत्व है वो इस चीज को, बिकॉज आगे आने वाले जो 10 20 30 साल रहेंगे, वहां पे ये एजिंग पॉपुलेशन एंड मेन विद प्रोस्टेट कैंसर, टू माय माइंड, इज गोइंग टू राइज विथ और विदाउट पीएसए। That's fantastic because now it has become a feed to the question to the policy maker who will be joining us shortly. But I would like to learn from Dr. Ishan that अभी जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि मतलब एक बड़ी जनता है जो अगर एडवांस थेरेपीज जो है उनको अगर मुहैया कराई जा सकें तो दे कैन लिव लॉन्गर एंड दे कैन हैव बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ। लेकिन ज़्यादातर ऐसा होता है एंड आई एम श्योर उसके बहुत सारे रीजंस भी हैं क्योंकि रिसर्च का कॉस्ट होता है और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, इंपोर्ट करना होता है बिकॉज इंडिया में बहुत सारी चीज़ें जो है R&D इतना स्ट्रॉन्ग जहाँ तक मुझे लगता है, आई मे बी रॉन्ग, उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो ऐसे में कॉस्ट बहुत बढ़ जाती है। तो जब नई दवाइयाँ इस तरह से आती हैं तो क्या उसके तरीके हैं कि कैसे जो है ज़्यादा लोगों तक वो चीज़ें बनाई जा सकें या उन तक अवेलेबल कराई जा सकें और कैसे उनको जो है एक्सेस जो है ज़्यादा लोगों को प्रोवाइड करा सके जल्दी से जल्दी। Yeah. Yeah. So I think this is a very important point when it comes to the access, right? And when we talk about access, one of the important parameter is the cost of the medicine, right? Now, in pharmaceutical, we call it as a COGS, so cost of the goods sold. So which includes all the aspects which you just now mentioned, right? It's a research, innovation, then production, import, taxation, marketing, and ultimately the distribution. Now, what we have also seen in India, and some of the panelists highlighted, that most of the patients fall in a later stage of the cancer. Now, when the patient diagnosed at a later stage, it's a multi-modality treatment approach, right? So it means not only the surgery, but surgery, radiotherapy, and sometimes chemotherapy, which can be IV or they have a state-sponsored insurance scheme.
we have like private insurance, and sir highlighted that some of the private insurance do cover the oral chemotherapy, which is not the case with all the insurance which are available for the lower strata of the population. So what is happening that the entire continuum of care is not maintained. So this Ayushman Bharat or the state insurance, they sometimes cover surgery and some aspect of the chemotherapy. But let's say the radiotherapy is not covered or the oral targeted therapy which is not covered. So the patient sometimes deprived of those therapy, which is an essential part of their entire continuum of care. And that is where the quality of care is not able to provide. I would cite one of the paper which got recently published in July 2023, which says that the average cancer patient spend 3.3 lakhs per annum out of pocket, despite of their health insurance, or they are covered under various schemes. Now, this studies like this is the data from like 12,000 or more patients from institute like TMH, AIMS or PGI Chandigarh. Now, ये 3 लाख कहाँ से spend होता है? So, some of the spend which patient has to incur from the diagnosis. So, before patient actually diagnosed that tumor staging is done, lot of expense happen. After that, surgery happens, which is covered by insurance, right? Second is that once the surgery is done, once the radiotherapy or some of the IV chemotherapy is done, patients are shifted on targeted therapy. Now those targeted therapies are not covered, so patient has to purchase. Because of the technology advancement, we have a lot of therapy which is given at a daycare setting. Now that is also not covered. So from all these areas, there is an additional expense which patient has to incur over and above their insurance. Now, what is the solution? I would say the public-private partnership would be a solution where all the player has to come together and increase the corpus which is available for a sum insured patient, right? Like how government has done, like develop a umbrella program for sickle cell, so National Sickle Cell Mission. Uh, Similarly, they need to have a national dedicated oncology program where all these various schemes which are available, they have to put it together, increase the corpus to ensure that the entire continuum of care, entire the modalities of the treatment should be catered to patient, so that we are able to provide a quality of care, and then we can see a better outcome. Thank you, Dr. Ishan. What you said, it makes a lot of sense, and probably बहुत सारे लोग या शायद पूरा का पूरा ecosystem उसी direction में काम कर रहा है. But I think there is always a challenge at the level of implementation. We have Ms. Urvashi Prasad with us. She is director at Niti Aayog. And Urvashi जी, नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत है आपका. आपके लिए बहुत सारे सवाल जो हैं इंतजार कर रहे हैं और दो चीज़ें जो है मैं आपसे जानने की कोशिश करूँगा. पहली चीज़ तो क्योंकि आयुष्मान भारत की जैसे हमने बात करी आपकी अनुपस्थिति में, लेकिन ये एक बड़ी अच्छी मुहिम है जो सरकार ने चलाई है. काफ़ी सारे लोगों तक पहुँची है और आपसे भी मैंने भी सुना है और यहाँ पे भी कई लोगों ने इस चीज़ को एक्नॉलेज किया है कि उसके भी और नए वर्जन्स आ रहे हैं. सरकार बहुत सारा काम कर रही है, लेकिन क्या चैलेंजेस हैं जो गवर्नमेंट इज फेसिंग इन टर्म्स ऑफ रीचिंग आउट टू पीपल और इम्प्लीमेंटेशन? बिकॉज हेल्थ केयर एक ऐसी चीज है कि जो शायद लाइक इट इट कैन नॉट वेट. लाइक आज अगर मैं बीमार हूँ तो मेरी बीमारी आज है और मुझे आज सोल्यूशन चाहिए. तो उसके लिए हाउ डू वी कम टुगेदर, हाउ डू वी first let us understand from you that what do you think that is there a roadblock, first of all? If yes, that how we can together try to address it. हाँ, थैंक यू विवेक जी. आप हमेशा मुझसे सबसे मुश्किल सवाल करते हैं, लेकिन नहीं तो मतलब यही कहूंगी मैं कि ऑब्वियसली मतलब चैलेंज हमारे सामने बहुत बड़ा है. मतलब कैंसर का ओवरऑल हम देखें चैलेंज इंडिया में और जो नंबर्स हैं वो बढ़ ही रहे हैं और आगे भी अनफॉर्चुनेटली मतलब लाइक्लीहुड यही है कि ये नंबर्स बढ़ेंगे. तो जब इस तरह का स्केल होता है, इस तरह की डाइवर्सिटी होती है किसी देश में और अभी भी बहुत से लोग हैं जिनको हेल्थ केयर का उस तरह का एक्सेस नहीं हो पाता है, क्वालिटी एक्सेस नहीं हो पाता है. बहुत से हमारे अभी भी अंडर सर्व्ड एरियाज हैं देश के. तो उसमें मतलब कहने की आवश्यकता ही नहीं है कि बहुत ही
कॉम्प्लेक्स चैलेंज है, और कैंसर जैसी तो बीमारी भी बहुत गंभीर होती है, कॉम्प्लेक्स होती है। कई बार अलग अलग तरह के ट्रीटमेंट होते हैं, महंगे ट्रीटमेंट होते हैं। अगर आपको नया लेटेस्ट ट्रीटमेंट कराना है तो वो कई बार बहुत एक्सपेंसिव होता है। तो बहुत से पहलू हैं जो इसके हमें डील करने हैं। और सरकार, जैसे आपने कहा कि मतलब पहल हमने ज़रूर की है काफ़ी अलग-अलग तरीकों से। और सरकार जब मैं कहती हूँ तो सिर्फ केंद्र सरकार नहीं, राज्य सरकारें भी हैं जिन्होंने बहुत अलग-अलग स्कीम्स लेकर आए हैं। खास तौर से जो गरीब मरीज़ हैं, कैंसर के पेशेंट्स हैं, उनके लिए कि उनका इलाज बेहतर हो सके। लेकिन अभी भी इसमें हमें, जैसे मैं पहले भी आपसे जब भी चर्चा हुई, ये कहा है कि बहुत सुधार का स्कोप है, या और चीज़ों को हमें इन प्रोग्राम्स में लाने का स्कोप है। तो चाहे जैसे मैंने कहा नए लेटेस्ट ट्रीटमेंट हैं, कई बार इम्यूनोथेरेपी होती है या कोई और तरह के ट्रीटमेंट होते हैं, वो ज़्यादा महँगे होते हैं। वो हम कैसे पहुँचा पाएँ लोगों तक, सो दैट जो गरीब से गरीब व्यक्ति भी हो उसको बेस्ट ट्रीटमेंट मिल पाए। तो वो एक ऐसा फ्रंटियर है जहाँ तक हमें पहुँचना है। और जो क्वालिटी है केयर की, मतलब सिर्फ, क्योंकि कैंसर पेशेंट की नीड तरह-तरह की होती है। सिर्फ उनका ये नहीं कि उनको कीमोथेरेपी दे दिया, रेडिएशन दे दिया और हो गया। उनको न्यूट्रिशन उनका देखना पड़ता है, उनकी और तरह की जो इकोनॉमिक, सोशल, साइकोलॉजिकल, मेंटल हेल्थ, अ, हर तरह की नीड को एक तरह से हमें केटर करना है। तो उसमें भी हमें अभी बहुत अ, ध्यान देना है, काम करना है कि एक होलिस्टिक हम सर्विस दे पाएँ। लेकिन ये सिर्फ गवर्नमेंट अकेले नहीं कर सकती, और ये बहुत ज़रूरी है बोलना, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा कि स्केल ऑफ द चैलेंज हमारे देश में इतना है कि कोई भी काम सिर्फ सरकार के लिए करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो हमें इसमें प्राइवेट सेक्टर का भी कोऑपरेशन चाहिए, उनका भी कोलैबोरेशन चाहिए। स्पेशली कि जो नए ट्रीटमेंट्स हैं, नए टेक्नोलॉजीज़ हैं, नए एडवांसमेंट्स हैं, वो हमारे पेशेंट्स तक कैसे पहुँच सकते हैं एक कॉस्ट इफेक्टिव वे में। उसमें प्राइवेट सेक्टर है, इंडस्ट्री है जो हमारी मदद कर सकता है। अलग-अलग तरह के जो इनोवेशंस हो रहे हैं कैंसर के, चाहे स्क्रीनिंग के लिए हो, चाहे उसके डायग्नोसिस के लिए हो, उनको हम किस तरह से लोगों तक पहुँचा सकते हैं, जो कॉस्ट इफेक्टिव हो, जो भारत के लिए सूटेबल हो। क्योंकि हर चीज़ भारत में बाहर से लाई जाए तो वो एक स्केल पे नहीं हम उसको पहुँचा पाते। वो कुछ ही सेंटर्स में सीमित रह जाती है। शायद आपको दिल्ली में मिल जाएगी, मुंबई में मिल जाएगी, लेकिन आप टियर 2, टियर 3 गाँव में जाएँगे, ट्राइबल एरिया में जाएँगे तो वहाँ मिलना आपको बहुत मुश्किल होता है। तो हमें ऐसे इनोवेशन चाहिए जो हमारे देश के लिए सूटेबल हो। ऐसी टेक्नोलॉजी चाहिए जो हमारे देश के लिए सूटेबल हो। तो इसमें प्राइवेट सेक्टर हो, स्टार्टअप्स हो, इंडस्ट्री हो, बहुत बड़ा रोल है। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का रोल है। आप अगर कुछ कैंसर पेशेंट्स के इलाज को भी अडॉप्ट कर लें कि भई जैसे अब हम टीबी टीबी में कोशिश कर रहे हैं कि भई आप टीबी पेशेंट को अडॉप्ट कर लीजिए एक तरीके से। उनका जो न्यूट्रिशन है, उनका जो ओवरऑल होलिस्टिक केयर है, उसको आप स्पॉन्सर करिए। तो इसमें सीएसआर का भी रोल है, इसमें सिविल सोसाइटी का भी रोल है। और कई बार हमें लगता है कि नहीं, हम तो बहुत मतलब छोटे हैं, हम तो सिर्फ एक छोटा-सा ही कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं। लेकिन वो छोटा-छोटा कंट्रीब्यूशन ही एड अप होके पूरा एक हमारे लिए बड़ा एक एफर्ट बन सकता है। तो इसीलिए ये किसी को नहीं सोचना चाहिए कि हमारा जो कंट्रीब्यूशन है वो बहुत छोटा होगा तो हम कोई फ़ायदा नहीं है। आई थिंक एवरीबॉडी हैज़ अ रोल टू प्ले, और सबका कंट्रीब्यूशन इसमें रेलेवेंट है, क्योंकि समस्या इतनी बड़ी है। अगर अगर समस्या इतनी बड़ी ना होती तो शायद सिर्फ जो सरकार है या कोई है उसको टैकल कर लेती, बट इस लेवल की समस्या नहीं है। समस्या बहुत ज़्यादा बड़ी है, तो हमारे जो एफर्ट्स हैं वो भी मल्टी स्टेक होल्डर होने पड़ेंगे। जी। I must thank you for your clarity in your your communication and the depth it has, because मुझे लगता है कि it's a bliss for a country like this to have an administrator like you who understands the other aspects of, who talks and advocates about the other aspects of cancer treatment, not just the therapy, not just the the treatment part.
while addressing, you addressed mental health and all those aspects as well, social health, financial health. We have a caregiver with us, Mr. दीपक बयानी. दीपक जी, हमें ये बताइए कि हम अभी तक चर्चा कर रहे हैं, समय काफी लिमिटेड है, क्योंकि देखिए ये इतना गंभीर मुद्दा है कि 1 घंटे में, 2 घंटे में या 1-2 दिन में तो ये बहुत कुछ निकल कर नहीं आ सकता है. एंड जैसा उर्वशी जी ने बताया कि हम सबको साथ मिलकर काम करना पड़ेगा और ऐसे इनिशिएटिव्स लेने पड़ेंगे. तो ये बताइए कि आपकी केयर गिविंग जर्नी से जो है आपने क्या 1-2 चीजें ऐसी सीखी जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहेंगे, जो शायद सारे के सारे स्टेक होल्डर्स को किसी न किसी काम आए? सर, इसके लिए हमारे साथ में एक मिस्टर भूपत सोनीग्रा भी है. जी. वो खुद भी ये इंश्योरेंस का करते हैं. उनको कैंसर हुआ था, प्रोस्टेट का कैंसर हुआ था, उनको अभी टोटली क्लियर है. मैं डॉक्टर अमित जोशी से पूछना चाहता था कि अगर ये जो है एंटाल्यूटामाइड अगर फेल होती है तो उसके आगे का कौन सा ट्रीटमेंट ले सकते हैं हम लोग? ओके सर, आई थिंक दैट इज अ सेपरेट क्वेश्चन एंड प्रोबब्ली आई विल कनेक्ट नहीं, विद उसके यू. बाद है कीमोथेरेपी वगैरह, डिपेंडिंग अपॉन दी स्टेज डिजीज. 2-3 तरह की कीमोथेरेपी है, ल्यूटिशियन थेरेपी है, मॉलिक्यूलर टेस्टिंग करके है. कम से कम एटलीस्ट 3-4 तरह की थेरेपी तो अवेलेबल है, प्रोवाइडेड उनकी जनरल कंडीशन ठीक रहे. तो ऐसा नहीं है कि एंजाइलोटामाइड के बाद ऑप्शन नहीं है. एटलीस्ट 2 और 3 ऑप्शंस तो हैं डेफिनेटली. बराबर. क्योंकि मेरे साथ में अभी 7 पेशेंट है जिसको प्रोस्टेट कैंसर है और 3200 पेशेंट है जो ब्रेस्ट कैंसर पेशेंट है मुंबई के अंदर से. थैंक यू सो मच अपना सवाल पूछने के लिए दीपक जी. आप अपना नंबर यहाँ पे चैट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं एंड विल स्टे इन टच, क्योंकि हम सब साथ आज यहाँ पे शाम को इसीलिए आए हैं क्योंकि हम सबको मिलकर जो है इस भयावह बीमारी से लोगों को बचाना है और एक ऐसा इकोसिस्टम तैयार करना है जिससे जो कि कल तक जो समस्याएं थी, चैलेंजेस थे, वो तो थे ही, लेकिन आगे आने वाली जनरेशन को क्योंकि बीमारी है जैसा कि सबने बताया कि ये इट इज गोइंग टू इंक्रीज फर्दर, तो आने वाली जनरेशन के लिए जो है वो इतनी तकलीफें ना हो जितनी हमने या हमारे आसपास के लोगों ने झेली हैं. आई एम डीपली ग्रेटफुल टू डॉक्टर अमित जोशी, डॉक्टर गगन, डॉक्टर ईशान पटेल, मिस्टर मूर्ति, डॉक्टर राजेश शुक्ला एंड उर्वशी जी. Thank you so much for being with us this evening, and we'll stay in touch. We'll keep connecting and we'll keep talking because ये जो आज का जो पैनल डिस्कशन है एक छोटा सा effort है to move towards enhancing and kind of shaping up the advocacy in our country so that a lot of people or all the stakeholders rather can come together and find a solution. Thank you so much everyone. Thank you so much. Thank you. Thank you. Thanks for having me. Thank you.